हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर दिस यूनिट इन 2 वीडियो लेक्चर्स। 2 वीडियो लेक्चर रहेंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर, एंड देन वी विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑफ इट। और सेकेंड वीडियो में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सॉल्व, एकदम बढ़िया से बढ़िया हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप दैट यू हैव पेन एंड नोटबुक इन योर हैंड। जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो और फिर लिख लो। इन दिस 2 वीडियोस, इफ यू सी दिस 2 वीडियोस, आपके भाई 5 से 8 मार्क्स फिक्स हो सकते हैं रिलेटेड टू सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। Okay, so without wasting much time, let us start with the numerical students. Okay, so first of all, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि यूनिट नंबर 2, ओके, यूनिट नंबर 1 पूरा अपलोड किया है यूट्यूब में, okay, that you can see very properly, but unit number 2 has 3 chapters. कितने chapters है स्टूडेंट्स? 3 chapters है। The first chapter deals with what, guys? Deals with what? It deals with the manometer. Manometer के ऊपर है। The second chapter deals with center of pressure. और जो third chapter है that deals with the buoyancy. So out of these 3 chapter means the unit number 2 has how many chapters? 3 chapters है। So for buoyancy do only theoretical part. Center of pressure we have to solve numerical, and in manometer also we have to try and solve about the numerical. Okay, so out of these 3 chapters today we are going to cover the second chapter, that is what students? Center of pressure. इस वीडियो में हम टोटली सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटर ऑफ प्रेशर हियर। ओके, सो ठीक है, what actually center of pressure is, let us see. So for example students, ध्यान दो यहाँ पर, this is the free surface of water, ये है आपका free surface, this is the symbol of the free surface of water, okay, and here we have water, पूरा water है। if for example, if I will dip here an object, एक object है, for example this is a rectangle here, एक rectangle है, this rectangle is inside this water, okay, fine, perfect. The center of rectangle will be here students, ये तो सभी को पता है, that this will be called as center of gravity. So what is happening, जब भी आप एक object, whenever any object is inside the water, what will happen? सभी जगह से pressure act होगा, सभी जगह से क्या act होगा? pressure act होगा। pressure किसका act होगा? water का ही act होगा। so that will be called as the total pressure. From all these sides the pressure is acting, from all the sides pressure is acting on this object, that will be termed as what students? That will be termed as the total pressure. Okay, that will be called as what, guys? That will be called as the total pressure. Okay, so again if I will draw here the diagram, same diagram I will draw. ठीक है, सो ये जो टोटल प्रेशर है स्टूडेंट्स, दिस विल एक्ट एट ए सेंटर पॉइंट, ओके, सेंटर पॉइंट, above the center point or below the center point, let us see. So first of all what we will do, we will see the notation. So center of gravity is, students, from center of gravity till the free surface of water, that will be denoted by x bar. Okay, so x bar is what, ये याद रखना है students, this you have to pay attention here, x bar. So x bar means from free surface till your CG, till the CG, that will be denoted by x bar. So I will write here very properly, x bar equals to distance of CG, correct? CG means center of gravity. From where? From free surface, from free water surface. free water surface से जो distance है CG तक का, उस distance को हम x bar से denote करते हैं students. Perfect. So all the pressure will act on a point that is called as the
सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ प्रेशर. ये सेंटर ऑफ प्रेशर एक तो सीजी के अबव रहेगा या फिर इट विल बी बिलो व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल बी बिलो द सीजी लाइन. Okay, are you understanding this? It can be above or it can be below also. So that I will denote it by CP. CP means what students? बोलो CP क्या रहेगा फिर? Center of pressure. Okay, it will be center of pressure. So the distance of that CP from free water surface से जो CP तक का डिस्टेंस है, CP सेंटर ऑफ प्रेशर मींस ऑल द टोटल प्रेशर इज गोइंग टू एक्ट हियर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है? सब मास एक सेंटर में एक्ट होगा, राइट? इन द सेम वे स्टूडेंट्स, इन द सेम वे ऑल द टोटल प्रेशर विल एक्ट वेयर ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर. दैट विल बी डिनोटेड बाय H bar. That will be denoted by what students? H bar. Okay, so what is the meaning of H bar? H bar का meaning क्या हो गया? H bar is nothing but students, it is the distance. It is the distance of center of pressure from where? From free water surface. Free water surface से CP तक का जो distance है, that will be called as what students? H bar. That will be termed as the H bar here. Okay, so the most important term here is finding out H bar. टोटल इस न्यूमेरिकल में हमें एक तो टोटल प्रेशर फाइंड करना है कैपिटल P, एंड देन वी वांट टू फाइंड दिस H bar. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सब बेसिक चालू है. आई होप दैट यू आर नोटिंग दिस डाउन वेरी प्रॉपरली एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. नहीं समझ रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट. परफेक्ट. सो X bar और ये H bar हुआ. In the same manner, what I told you, we have to find out the value of what students? Pressure. So pressure का एक formula याद रखो. Its formula is S into gamma into A into X bar. Perfect. This is the formula for finding out total pressure. ये है total pressure का formula. S into gamma into A into X bar. This will be the total pressure students. This is our first formula. ये आपका है first formula. So I will just star mark here. Okay. First formula है students here. Very important it is. This formula is very important. In the same way, H bar का भी formula है. We have the formula for H bar also. So let us see what's the formula of H bar here. So H bar is given as, okay, just wait for a minute. So therefore H bar का जो formula है, that will be what students? That will be X bar plus Ig sin square theta. Okay, X bar plus Ig sin square theta upon A X bar, A into X bar. I hope that you are understanding this. ये एक formula है. So total we have to study this two formulas, X bar plus Ig sin square theta upon Ax bar. These are the various formulas that we have to, what students? We have to study here very properly. So we will write down its meaning. We'll write down its meaning. उसका meaning लिख लेते हैं students. Okay, so X bar we all know it is the distance of CG from free surface water, but what is the meaning of Ig here? What is A? What is S? What is gamma? Let us see here. Okay, S means what students? I am writing here. S means what? Specific gravity. Specific gravity. Okay, so specific gravity for water, ये एक चीजें याद रखो. S for water is always what? Is always 1. S for mercury, the S value, the specific gravity का value क्या रहेगा? 13.6 रहेगा students. Okay, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये specific gravity की value दिया नहीं रहता है. So you have to learn this very properly. ये learn करो. अगर क्वेश्चन में water आया है तो आपको पता चाहिए that S of water is 1 as well as S for mercury is 13.6. So S is what students? It is the specific gravity. Perfect. In the same way, if we will talk about gamma is nothing but what students? It is specific weight or weight density. So weight density का जो value है for water, you have to take only this value
ध्यान दो, you have to take only this value, that is 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. कौन सा भी क्वेश्चन आने दो स्टूडेंट्स, any question out there, but you will take the value of gamma. What you will take the value of gamma as 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? स्पेसिफिक ग्रेविटी लर्न करो. वाटर के लिए 1, मर्क्यूरी के लिए 13.6, gamma weight density water के लिए है 9810. always you are going to use it. Perfect. In the same way, A stands for what students? A stands for area. Okay, A stands for the area. उसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर. x bar you know, A you know, theta is the angle made by surface. Okay, so there are two types of numerical that I will explain you. Angle between the surface, that we will see what it is. Okay, and Ig, what is the meaning of then Ig students? Ig का meaning क्या रहेगा फिर? It is nothing but the moment of inertia. Means you have to study here about what students? You have to study here about the moment of inertia also. Okay, so I will write here this Ig. Ig will be moment of inertia. I will write here Ig as moment of inertia. उसका यूनिट है स्टूडेंट्स मीटर रेज टू 4. उसका यूनिट है मीटर रेज टू 4. I hope that you are understanding this very properly. Okay, so सबसे important चीज, if you want to gain full marks in this chapter, you have to be well aware of area. आपको area पता रहना चाहिए, and then you should know moment of inertia also. आपके पास सब values learn होने चाहिए. moment of inertia for rectangle, for triangle, for circle, semicircle. ये 4-5 चीजें हैं वो याद रखनी है. So in next point we are going to discuss about what? Area, moment of inertia. If you can understand this part, अगर आपने ये understand किए कि ये शेप का एरिया ये है, ये शेप का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. Okay, so you can be well versed with it. Okay, so let us jump into the next point students. Okay, we'll discuss about what? We'll discuss about the area. हम एरिया के बारे में बात करेंगे. ठीक है. So the first area that we are going to discuss here is the rectangle. A rectangle, this will be its breadth. Horizontal distance means what students? Horizontal distance is nothing but the breadth. Vertical, if you will talk about the vertical distance, it will be depth. Depth means height. So tell me students, its formula will be what its formula will be? Okay, so first of all this will be its center. So उसका area रहेगा B into D, breadth into depth area. ठीक है. Now in order to find moment of inertia student, we should have an axis. So axis हमेशा left side और bottom point से लेना है. Are you understanding? Okay, so from axis horizontal जो distance रहेगा, this horizontal distance will be called as what? X bar. ये रहेगा आपका X bar और Y bar. ठीक है. So what will be the formula for X bar students? here बोलो B by 2. B का half रहेगा. And what will be its moment of inertia? उसका Ig का value ये याद रखना है, BD cube by 12, और it can be what students? It can be DB cube by 12 also. अगर आपने IYY consider किया है, so for that you have to take DB cube by 12. This is for IXX. IXX means what? When it is cutting an X axis. When it cuts an X axis, देखो भाई किसको कट कर रहा है? डेप्थ को कट कर रहा है. डेप्थ का क्यूब ले लो. अगर समझो YY axis, if you want to consider YY axis, it is cutting what? It is cutting breadth. So B cube D you can consider there for Ig. ठीक है. But generally mostly we are going to take the moment of inertia along the X axis only. So first one is the rectangle. Sometimes what happens, hollow rectangle भी पूछा जाता है. Okay, so for hollow rectangle you have to just minus it out. So the first one is the rectangle. ठीक है. Second जो है students, second
that is the circle. We have to be well versed with the circle here. We should know the area of circle, and we should know the moment of inertia of circle also, students. Okay, so let us see, let us talk about this circle here. Okay, so this will be its center point, students. ये center point रहेगा. The horizontal distance here, will be what, students? It will be its diameter. और जो vertical distance रहेगा, that will be also what, students? That will be also its diameter. So I will write here d diameter और ये भी diameter. So what will be the area of circle? Circle का area क्या रहेगा? Pi by 4 d square, and its x bar. Again, what you have to consider, from where you have to consider, from right side here, left side से consider करना पड़ेगा, students. And the bottommost part. Perfect. So what will be the horizontal distance? Horizontal distance उसका half ही रहेगा. It will be its half, diameter का half. So I can write down here x bar. Okay, I can write down here x bar equals to d by 2. This is very important, ये याद रखना है. Then what will be the moment of inertia? Its formula will be pi by 64 d raised to 4. Pi by 64 d raised to 4 will be the formula for what? Moment of inertia, ig के लिए. I hope you are understanding this. Second, let us talk about triangle. Okay, third जो है, जो important है, that will be what, students? That will be a triangle. Let us try to draw the triangle. Okay, so this is the triangle out here. The horizontal distance will be obviously, yes, called as its base. This will be its base. और ये जो vertical distance है, this will be its height. So b, and this will be what? This will be your height h. Okay, जो center रहेगा, students, this center will be here. So again, if I want to find out the moment of inertia, for that I will require x bar, y bar. ठीक है भाई, x bar y bar क्या है, चलो देख लेते हैं. What is x bar and y bar? Let us try to see it. Perfect. So if I will talk about this distance here, ये जो horizontal distance रहेगा, student, this distance will be what? b by 2. Are you getting this? कौन सा distance b by 2 रहेगा? ये half distance b by 2 रहेगा. Okay, so this half distance will be what, students? It will be b by 2. And if you will see the vertical distance क्या रहेगा? The vertical distance will be h by 3. ये याद रखो, this is important. So this will be what, student? This will be our h by 3. Okay, h by 3. So remaining will be what? Remaining will be 2h by 3. देखो भाई, 2h by 3 और h by 3 को add करो. Your answer will be what? Your answer will be only h. Okay, so remaining upper part will be our 2h by 3. टोटल h हो जाता है. ओके, सो एरिया, सबसे पहले तो एरिया डिस्कस करते हैं. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. बेस हॉरिजॉन्टल, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, उसका जो x बार है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर x बार? b by 2. अगर आपको वर्टिकली डिस्टेंस जाना है, इफ यू वांट टू गो फॉर वर्टिकली, तो एक बात याद रखो, दैट इट विल बी व्हाट? इट विल बी h by 3. Are you getting this point? Perfect. So its moment of inertia. So generally its moment of inertia is taken as bh cube upon 36. bh cube upon 36. So mostly these three are the shape. और जो last shape है, that can be asked, अगर complicated question पूछा गया, that can be asked, that will be your semicircle. So if you will consider a semicircle, if you will consider here a semicircle, students, fine. So similarly what you have to do, you have to create a coordinate system बना. This will be our middle point. ये middle point रहा, fine.
ये जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस विल बी डायमीटर, ये डायमीटर रहा. Are you understanding? This will be our diameter. Now tell me what will be the vertical distance. Vertical distance क्या रहेगा? What will be this vertical distance? This vertical distance will be our radius. The vertical distance will be the radius, that will be r. Perfect. So area का formula, circle का area का formula pi by 4 d square है, या फिर आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो. पाई बाय 4 डी स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैन बी दी फॉर्मूला. सिमिलरली सेमी सर्कल मीन्स व्हाट, हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ है. सो व्हाट आई कैन राइट हियर पाई आर स्क्वायर बाय 2. परफेक्ट. अगर आपको x बार डिस्टेंस फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड दिस x बार डिस्टेंस, दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट, दिस विल बी दी d by 2. This will be d by 2, that is the radius. But if you will see the vertical distance, अगर आप vertical distance देख रहे हो students, if you are seeing here the vertical distance, that will be 4r by 3 pi. ये याद रखो, 4r by 3 pi. If you can understand this semi circle का trick आप समझ गए, you can start solving some complicated question also. So the moment of inertia for the semicircle is 0.11 r raised to 4. Are you understanding? Okay, I hope that आपको ये basic समझ रहा रहेगा. You can pause the video, you can take the screenshot. If you are writing, write it down very properly. Generally इस unit के लिए ये 4 shapes की जरूरत पड़ेगी. These 4 shapes will become very important, students. Okay, so perfect. So I hope that you have understood the basic. Okay, and we had solved the formulas. We have written the formulas also. ये दो formulas एकदम बढ़िया से बढ़िया करो. P means total pressure, H bar is the height of center of pressure. ये दो formula की जरूरत हमें पड़ेगी. ये दो formula की हमें जरूरत पड़ेगी. ओके, कैपिटल P S gamma A x bar, H bar का x bar plus IG sin square theta upon A x bar. Great. Okay, so without wasting much time, let us deeply dive into the numericals. Let us see how to solve numericals. If you can understand this basics, then and then only solve this numericals. फिर से बेसिक ने समझा, फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो भाई. ओके, perfect. So let us solve this question very properly. Let us understand how to gain full marks in the center of pressure numericals. Perfect. So let us read the question properly. देखो क्या है question. Okay, a circular plate of 1.5 meter diameter. Okay, 1.5 meter diameter का एक circular plate है. It is completely immersed in water. How it is immersed? It is immersed vertically immersed किए, such that its top edge, okay, उसका जो top edge रहेगा वो 0.6 meter below है free water surface के. हमें find क्या करना है? What we have to find? We have to find here the total pressure. We have to find here the total pressure on the plate. Total pressure means P, and we have to find out the position of center of pressure. Okay, so position of center of pressure I have told you, it is nothing but H bar, means हमें H bar find करना है. Are you understanding this? Fine. So let us see how to solve this numerical here. Okay. So first of all I will write down the given data. सबसे पहले तो given data लिख लो. So if you are able to draw the diagram, अगर आपको diagram आ गया students, this will be a piece of cake for all of you. Diagram draw करिए. Diagram से concept clear होता है. Okay, very important to draw what students? Very important to draw here the diagram. डायग्राम से समझेगा आपको. और ये जो डायग्राम है जनरली ये कॉमन रहेगा डायग्राम. फ्री वाटर सरफेस ऑब्वियसली इट विल बी कॉमन, सिर्फ शेप चेंज हो सकता है. यहाँ पे सर्कल है, सो इंस्टेड ऑफ सर्कल इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ए सेमी सर्कल, इट कैन बी ए ट्रायंगल ऑल्सो. परफेक्ट. सो सबसे पहले देखो, ए सर्कुलर प्लेट 1.5 मीटर इज इमर्ज्ड वर्टिकली. ओके, सो वर्टिकल प्लेट है, सो इट इज इमर्ज्ड वर्टिकली हियर. सो ये वर्टिकली हो गया.
ठीक है, इसका ये प्रोजेक्शन है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कल हियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। ओके, द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज हाउ मच, कितना डायमीटर है 1.5 मीटर, सो 1.5 मीटर लिख लो, this will be the diameter of this circle, so I will write down here 1.5 meter is completely burst such that its top edge, उसका जो टॉप एज है वो 0.6 मीटर बिलो है फ्री वाटर सरफेस, सो दिस इज योर फ्री वाटर सरफेस, दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है दैट इज नथिंग बट द फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस से उसका जो टॉप एज है वो कितना मीटर है स्टूडेंट्स, हाउ मच इज बीन गिवन 0.6 मीटर दिया है, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस विल बी हाउ मच, the distance of this will be 0.6 meter, perfect, let us write down here 0.6 meter, done। determine the total pressure and the position of center of pressure, so ये जो point है, ये point क्या हुआ, ये point हो गया center of gravity, center of gravity, if you will see center of gravity से फ्री वाटर सरफेस का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, बोलो, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिल फ्री वाटर सरफेस, दिस डिस्टेंस विल बी x bar, this distance will be x bar। see, for solving any circular plate or any shape numerical center of pressure है, this you should be aware of, आपको एरिया निकालते आना चाहिए, okay, then next is the x bar and then next is the ig। if you can master these three things, अगर आपको ये तीन चीजें फाइंड करते आ गए, so कोई भी आपसे मार्क्स छीन नहीं सकता है स्टूडेंट्स। ए एक्स बार और IG, एरिया फाइंड करो, एक्स बार फाइंड करो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करो, ओके, परफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द एरिया, बाकी कुछ फॉर्मूला यूज मत करो, नो वरीज एट ऑल, सबसे पहले एरिया फाइंड करो, बोलिए स्टूडेंट्स, द एरिया, ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई बाय 4d स्क्वायर, the area of circle is pi by 4d square, so therefore the diameter here, diameter कितना दिया है, diameter है 1.5, so 1.5 का square, so if you have the calci in your hand, okay, you can properly solve it, तो चलिए solve करते हैं, साथ में ही solve करते हैं, so pi divided by 4 into 1.5 का square, the answer is 1.767 मीटर स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है, एरिया तो मिला हमें, एरिया विल बी 1.76 मीटर स्क्वायर, ओके, डन विद द एरिया। उसके बाद हमें एक्स बार फाइंड करते आना चाहिए, सो द वैल्यू ऑफ एक्स बार, लेट अस सी एक्स बार क्या है, थोड़ा मैथ्स यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड मैथ्स, ओके, अगर ये डिस्टेंस एक्स बार है और ये 0.6 है, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, बोलिए, ये डिस्टेंस रहेगा हाफ ऑफ द डायमीटर, ये डिस्टेंस उसका रेडियस रहेगा, इफ यू विल add 0.6 and this distance 1.5 का half 0.75 स्टूडेंट्स, ओके, सो ये डिस्टेंस हो गया 0.75 मीटर, इफ यू कैन ऐड इट इजीली हमें x बार मिल जाएगा, देखो फ्रॉम टॉप सरफेस इट इज बीन गिवन दैट इट इज हाउ मच मीटर 0.6, सो 0.6 प्लस 0.75, okay, 0.6 plus 0.75 will be the value of what, will be the value of the x bar, which turns out to be 1.35 meter, so the value of x bar will be 1.35 meter students, okay, done। तो x bar भी फाइंड करते आ गया, ये हो गया x bar, okay, after x bar we should be able to find what, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो ठीक है भाई, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करते आना चाहिए, यू हैव टू फाइंड हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, ओके, सो लिटिल बिट ऊपर करता हूं, थर्ड पॉइंट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट IG का फॉर्मूला क्या है, IG का फॉर्मूला है पाई बाय 64d raised to 4, okay, so therefore pi upon 64,
d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 1.5, so 1.5 raised to 4. So the final value of moment of inertia, if you will solve very properly students, pi divided by 64 into 1.5 raised to 4, its value will be what, 0. Its value will be 0.248 meter raised to 4, 0.248 meter raised to 4. ये है moment of inertia. Perfect. So in this way I am able to find out all the three important parameters to solve center of pressure. ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, a, x bar and ig, a, x bar and ig. चलिए ठीक है. So first of all we will find out the value of total pressure. Total pressure का formula क्या है? Let us see. We have learnt the formula. क्या है formula? देखिए, P equals to S into gamma into A x bar. Fine. So we will write down its formula as what, students? We'll write down the formula. First हमें find क्या करना है? Total pressure. So let us write the total pressure here. So first case we will find here total pressure. So total pressure का formula क्या लिखे थे? P equals to S into gamma into A into x bar. If you will see properly, the liquid is water. Water के लिए S की वैल्यू क्या है? 1. हमेशा gamma specific weight क्या consider करो? कौन सा भी numerical रहो, but then also consider gamma value as what? 9810. Area. चलिए area देख लेते हैं. What is the value of area? 1.67 and the value of x bar 1.35. So we'll write down here 1.35. I hope that you are understanding, students. आपको समझ में आ रहा है टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं. सो जस्ट पुट डाउन इन दी कैल्सी में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा. सो द आंसर ऑफ प्रेशर विल बी 23.403 into 10 raised to 3 Newton. Okay, so 10 raised to 3 Newton means what? You can convert it into kilonewton also. So pressure P equals to 23.403 kilonewton. I hope that you are understanding, guys. If you have any doubt, comment in the comment section. If you are understanding, भाई एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बटन तो भाई प्रेस करो ही. Okay, so total pressure we have find it out very easily, very properly. Fine. So the next term that we have to find, student, is what? Height of position of pressure, right? No, and position of center of pressure का position find करना है. Okay, so its formula let us write down. Second, we have to find position of center of pressure. So I will write here position of center of pressure. देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना ही पड़ेगा if you want a good score. Position of center of pressure. Position of center of pressure means what? It is nothing but h bar, students. It is nothing but h bar. So we'll find out the value of what? We'll find out the value of h bar. सिर्फ h bar हमें find नहीं करना है. We have to plot also. We have to plot that h bar on the diagram. बहुत सारे students क्या करते हैं कि h bar find कर लेते हैं, but उन्हें out of marks नहीं मिलता है. Why? Because we have to plot this h bar on our diagram. So diagram carries marks. Okay, perfect. So h bar का फॉर्मूला क्या था? h bar का फॉर्मूला था x bar plus ig into sin square theta upon ax bar. Okay, so one more trick I will tell you. ax bar, if you are seeing this sin square theta, अगर sin square theta vertically है या 90 डिग्री या हॉरिजॉन्टल, अगर आपका थीटा 90 डिग्री रहा तो sin square theta को डायरेक्टली किससे रिप्लेस करो? 1 से रिप्लेस करो. अगर समझो कुछ एंगल है 30 डिग्री 40 डिग्री रहा, then you put down theta value as what? 30 and then you solve it. But अगर वर्टिकल रहेगा, वर्डिंग अगर वर्टिकल रहेगा 90 डिग्री रहेगा, सो साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली 1 पुट करो. मीन्स ये जो एच बार का फॉर्मूला, ये एच बार का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार. परफेक्ट.
Okay, so the value of h bar, let us see. X bar था 1.35. What was the value of IG? IG का value 0.248. Okay, so 0.248 is the value of a moment of inertia upon area. Okay, what was the value of area? 1.767 into x bar. Okay, so x bar will be what? X bar कितना रहे? Yes, 1.35. So if you will put this in calci, if you will put this in calculator, the h bar will turn about what? 1.45 meter. Are you understanding? Calci में put करो, easily आपको answer मिल जाएगा. So the value of h bar will be 1.45 meter. This is not the end of the question. भाई ये question समाप्त नहीं हुआ यहाँ पर. Okay, we have to plot this h bar where in the diagram. तो देखो ये how to plot. x bar कितना था students? x bar था हमारा 1.35. Okay, but what is the value of h bar? What is the value of h bar? 1.45 है. देखो क्या है 1.45. सो एक्स बार के नीचे ही क्या रहेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर है ना. सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट स्टूडेंट? सेंटर ऑफ प्रेशर. सीजी के नीचे ही ड्रॉ करो. दिस इज एक्स बार, देन दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट? दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? दिस विल बी एच बार. ये डिस्टेंस रहेगा एच बार. This distance will be what student? This distance will be the h bar. I hope that you are understanding this very properly. This is the final question. This is how to solve the question. How to solve the question very properly. Okay, so हमें find करना था total pressure. Okay, the total pressure का आंसर आया है 23.403 किलो न्यूटन और h bar पोजीशन कितना आया है? 1.45 मीटर. 1.45 meter. Perfect. Great. Okay, so in this way I hope that you are understanding this very properly. Fine, perfect. So this was our video 1. Thank you so much for watching students. Next video mein we are going to solve more amount of numerical. We'll solve more amount of numerical very properly. So if you are liking this video, please like it. और बाकी के notification के लिए on करो भाई आपका notifications. Yes, so keep on learning, keep on doing the good work. Thank you so much students.